जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जो नार्को टेररिज्म है, जिसको हम नार्को टेररिज्म बोलते हैं, there has been a huge push of narcotics from across the border in Jammu and Kashmir. Whether it is जी Uri, whether it is in Rajouri, whether it is in Poonch. So they started building their module from the drugs, right? Building the couriers for drugs, because that's the easiest money you can pay somebody. Somebody makes very quick money. It's a very, very quick money making machine, right? And once you get into that track of moving drugs, then the next step is you move the weapon with the drug. Yep. You have to protect your Right? lines, correct? You have to protect your lines. Then next move is, अच्छा ठीक है, तुम ड्रग भी ले गया, तुम पैसे भी ले गए, अब ये मेरे 4 बंदे भी ले जाओ, इनका भी रास्ता दिखाओ. And then the man who is into that trade is trapped. Either he has to, either he will be eliminated, he knows he'll die, or he has to follow it very quietly. So that is the module they follow, because if you remember, there was an infiltration attempt in Uri where I think 2 of them were killed and we found the bodies. They were not carrying any weapons. They were only carrying drugs on themselves. And they were Pakistani, POJK based people. They were not even locals. So the idea was to get in the drugs, come in without the weapons. The weapons are already here. They have been drone dropped or they have been moved by a, human courier. And then you pick up the weapons, you do your action, you might dump the weapon back and then you walk across, or, you just go and hide yourselves. So the module and the tactics of the terrorism has also changed, right? Their whole approach towards the game has already changed. What in Hinterland we used to call hybrid terrorism, कि यार ये सुबह killing करेगा, शाम को घर चला जाएगा. But that has not been very, very successful. That model has not picked up. People rejected it. यहाँ पे the youngsters didn't fall for it. Thank God they didn't fall for it. It would have been a mayhem. But that is essentially what they are doing. So you never know. It's not necessary that they are carrying the weapons all the time, or they might be without weapons, sitting somewhere, take it out from the dump, do their action, put it back, and then essentially then walk free. That could also be the case. That's a very deep. Sorry, मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था क्योंकि that's a very deep thought. Because one of the things that you actually see is इन लोगों ने सेंसिटिव टारगेट्स उठाने शुरू करे थे, क्योंकि काफी माइग्रेंट लेबर आई थी, माइग्रेंट पॉपुलेशन वहां पर वैली में आई, वैली क्या काफी उस रीजन के अंदर आई, उनको टारगेट करना शुरू किया, स्पेशली हिंदू, स्पेशली गाइज हु आर फ्रॉम द हिंदी बेल्ट, एज सो कॉल्ड एक वो नैरेटिव चला था ना, हिंदी बेल्ट को हम आने नहीं देंगे वहां पर एंड ऑल दैट. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव एक्चुअली ब्रॉट अबाउट. आपको ऑन द ग्राउंड क्या आवाज दी? जय हिंद. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.